Hello children, how are you all? Welcome in your English class with your book Pebbles of Grammar Class 6 by Magic Mind from Galaxy Publications. We will start children chapter number 4 and the name of this chapter is Nouns Number. So let's learn singular and plural nouns. Nouns can be either singular or plural in number. जो नाउन होते हैं बच्चों वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी नंबर्स में. So a noun that denotes a single person, place, animal or thing is called a singular noun. जो एक person, एक चीज, एक एनिमल या फिर किसी एक प्लेस की बात करें वो होगा सिंगुलर नाउन. एग्जाम्पल्स अम्ब्रेला, बुक, बॉय, कैट, कप. A noun that refers to more than one person, जो एक से ज़्यादा person की बात करे, place, animal or thing is called a plural noun. Examples umbrellas, books, boys, cats, cups. So only countable nouns जो कि हम गिन सकते हैं can be plural in numbers. Okay, how to form plurals अब ये सीखते हैं हम. There are some rules, कुछ rules होते हैं by which plural nouns are formed from singular nouns by adding s. s add करते हैं हम singular में so that becomes plural to singular noun like dog, dogs, road, roads, chair, chairs, bowl, bowls. By adding es to noun ending with a hissing sound, जिसकी hissing sound से end होती है like s and x sound. Okay, singular जैसे gas आप देख रहे हो hissing sound है gases, grass, grasses, coach, coaches, class, classes, brush, brushes, and with the same way you will read this yourself. Okay, now by adding es to noun ending with o, जो noun o से end होते हैं उनमें भी हम es add करते हैं like mango, mangoes, negro, negroes, cargo, cargos, eco, ecos, tomato, tomatoes, hero, heroes. Now by adding just s to some noun ending with o, कई बार जो ओ से एंड होते हैं उनमें सिर्फ हम एस भी ऐड करते हैं लाइक फोटो, फोटोज, कुकू, कुकूज, पियानो, पियानोज, रेशो, रेशोज. बाय एडिंग जस्ट ves टू नाउन एंडिंग विद f एंड fe, जो f और fe से एंड होते हैं उनमें हम ऐड करते हैं प्लूरल बनाने के लिए ves. लोफ, लोव्स, नाइफ, नाइव्स, वुल्फ, वुल्व्स, वाइफ, वाइफ. These sides of noun you will read yourself. By adding s to some noun ending with f, जो f से end होते हैं, जो noun f से end होते हैं उनमें भी हम simple s add करते हैं. chef, chefs, roof, roofs, safe, safes, cuff, cuffs, chief, chiefs, proof, proofs. By changing the y into ies, y को हम ies में चेंज कर देते हैं इन नाउन्स एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट प्लस y. जो नाउन कॉन्सोनेंट और y से एंड होते हैं उनमें हम y को हटा देते हैं और उनकी जगह ऐड कर देते हैं ies, जैसे कि कैंडी, कैंडीज, लिली, लिलीज, चेरी, चेरीज, पोनी, पोनीज, बेबी, बेबीज, ग्लोरी, ग्लोरीज, लेडी, लेडीज, बॉडी, बॉडीज. By adding s to noun ending with a vowel plus y, जो vowel plus y से end होते हैं उनमें हम simple s ऐड करते हैं जैसे monkey, monkeys, day, days, key, keys, joy, joys, chimney, chimneys, toy, toys. By changing the inside vowel or vowels of the singular noun, goose, geese, यहाँ पर हमने inside vowels इसके चेंज कर दिए हैं. फुट, फीट, टूथ, टीथ, वुमेन, वुमेन, मैन, मेन, माउस, माइस. By adding s to the main word
in nouns that consist of several words, जिसमें बहुत सारे words होते हैं, उसमें हम मेन वर्ड जो है नाउन का उसे चेंज कर देते हैं, लाइक फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, टीचर इन चार्ज, टीचर्स इन चार्ज, ऑफिसर इन चार्ज, ऑफिसर्स इन चार्ज, कमांडर इन चीफ, कमांडर्स इन चीफ. The following nouns have the same form in singular and plural. इनकी सेम फॉर्म रहती है, चाहे आप इसको सिंगुलर के लिए यूज़ करें या प्लूरल के लिए, ये चेंज नहीं होते. वो वर्ड्स हैं डियर, शीप, फिश और एजेंडा. सो यूज इन सिंगुलर है इनका, द डियर इज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द स्ट्रीम, और प्लूरल में यूज है सेवरल डियर वर रनिंग थ्रू द फॉरेस्ट. The sheep is gazing along in the field. The sheep are resting under the tree. The fish is swimming along in the bowl. Many fish are swimming in the pond. अब नोट है यहाँ पर बच्चों आपके लिए, sometime the word fishes is also used, ये भी यूज़ करा जाता है. The singular fish suggests a single variety of fish. Okay, एक ही variety की fish है, ये suggest करती हैं. Some nouns refer to things that have two main parts, जिनके दो main part होते हैं, such as scissors और trousers. These nouns are always used in the plural form. इन्हें हमेशा s लगा के ही use करते हैं, जैसे कि scissors, trousers, jeans, tongs, spectacles, shorts, clothes, scales, pincers और binoculars. Example है, the scissors are blunt. Okay, so plural verb है are. This is my pair of scissors. Singular verb है is. My jeans have become old. Plural verb है have. And my pair of jeans has become old. Singular verb है has. There are some nouns that are plural in form but singular in use. मतलब कि फॉर्म में तो वो प्लूरल है लेकिन यूज में वो सिंगुलर है, और वो वर्ड्स हैं न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, बिलियर्ड्स, मैथमेटिक्स. सुनने में लगता है कि ये, और देखने में भी एस लगा हुआ है, कि ये प्लूरल है, लेकिन आप यूज़ करोगे तो सिंगुलर में करोगे. द न्यूज़ इज़ वेरी एक्साइटिंग टुडे, फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. इन बोथ सेंटेंसेस द सिंगुलर वर्ब इज हैज़ बीन यूज्ड. Most abstract nouns are uncountable and do not have a plural form. However, some abstract nouns can have plural form. For example, glory, glories, creation, creations, decision, decisions, truth, truths. The noun dwarf, hoof, scarf and graph take either s or es. Like you can see here, draft, drafts, drafts, hoof, hoofs, hooves. So, या तो ये s लगता है इनके साथ या es लगता है. Some nouns that name substances or materials such as gold, silver, copper, wood, clay and aluminium are uncountable and are used only in the singular form. इन्हें आप plural में नहीं change करते. Example देखेंगे, gold is an expensive metal, copper is a useful metal. Some nouns can be both countable and uncountable. When used as countable nouns, they have a plural form. Examples of countable usage: sounds, strange groaning sounds echoed from the nearby bushes. So ये countable usage है, okay? और sights. We enjoyed many breathtaking sights during our train journey. The same nouns used as uncountable. अब uncountable में कैसे use होगा? Sound. A thunderous sound filled the air and startled everyone. Sight. Watching the sun set over the ocean was a magnificent sight. So children, now let's practice. Work in pairs. Give the plural of the following singular nouns. So baby, babies, bunch, bunches, mosquito, mosquitoes, tornado, tornadoes, baby, babies, volcano, volcanoes. Rest of the part you will do yourself. Fill in the blanks with the singular or plural form of the nouns given in brackets. So
I put bangles, rings and chain in the jewelry box. The police caught all the robbers. All हैं तो बहुत सारे हैं. All the robbers as they tried to run away in their car. The orange I ate was very sour. The sight and sound of nature delight us. She wore a red dress to the party. Even babies, baby का हो गया babies, nowadays know how to use a mobile. Rest of the part children you will do yourself. Okay? Sentence के according आपको यहाँ पर singular या फिर plural form लिखना है. Next exercise children, change the underlined noun into their singular form, make other necessary changes. So purses are made of leather. So हमें purses को change करना है. So purses का हो गया purse. अब पर्स के साथ we will use singular verb that is. Purse is made of leather. The horses were galloping. The horse was galloping. Okay? So sentence के according आपको इसमें जो भी changes ज़रूरी हैं वो करने हैं. There are mango trees in the garden. There is a mango tree in the garden. These kittens are so cute. This kitten is so cute. She eats bananas and apples every day. She eats banana and apple every day. The monkeys were jumping from one tree to another. The monkey was jumping from one tree to another. Rest of the part children you will do yourself. Match the words in column A with those in column B to complete the sentences. Okay, ये मैंने यहाँ पर किया हुआ है. Now write out the complete sentences using is, are, was और were. So आपको ये दोबारा से लिखने हैं इन verbs के साथ. Okay? चलिए. The latest news is about India getting gold in the Olympics. Economics was my favorite subject in school. Apples are good for health. Okay? So हमारा ये भी हो गया good for health and Olympics वाला भी we have done. His pair of pajamas is striped. The game of billiard is very exciting. The babies were screaming and shouting. Physics is a difficult subject. My clothes are drying in the sun. The students were hungry and the principal is very strict. So, जैसे भी मैंने आपको बताया है आप इनको complete sentences खुद से लिखिए. So children, now this chapter ends here. I hope that you have understood it. Thanks for watching. See you soon.